Even with being a feminist, no one is born fully formed. For me, Karva Chauth happened once. It was a mistake, as was the marriage, by the way. I mean, you fast for the long life of your husband. There's no one fasting for the women. हाँ नहीं, उनका लंबी आयु से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मर्दों के पास लाइट है शायद. किसी का भी आप पे हक नहीं है जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपकी एज अ वाइफ ड्यूटी नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा. Fasting for religious reasons, especially when it is gendered, is only a means of control. मत खाओ खाना, तुम्हारा आदमी मर जाएगा. आप वैल्यूएबल तभी हैं जब आप एक अच्छी पत्नी बन के अच्छे कर्म जैसे कि करवा चौथ करके ही अपने पति के लिए अच्छी बनेंगी. is the point that we are debating. Hi, I'm Kaushal, feminist counselor and author. Hi, I'm Siddhaarth Aalambayan, the host of the Male Feminist Mashable Mornings and Bombay Journey. And this is Relationship, जहाँ हम लोग love, lust, romance, मॉडर्न डे इंडिया की रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं और इवॉल्व और इम्प्रूव होने में आपकी मदद करते हैं और खुद भी इवॉल्व होते हैं. Absolutely. And today we are taking a hammer to Karva Chauth, one of the most patriarchal of the patriarchal rituals of Hinduism. Now, issues like this are causing conflict and clashes in cultures and couples. And इस बार हम देखेंगे कि इसके बारे में, करवा चौथ के बारे में और इन क्लैशेस के बारे में हम करें क्या, क्योंकि जरूरी है. देखिए, हम एक हिंदू माइथोलॉजी को लेके आगे बढ़ रहे हैं जहां पर ये कहा गया था कि वीरावती ने कुछ किया, उन्होंने फास्ट नहीं किया तो उनके पति को इलनेस आई. कोई लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, बट जनरली मोटा मोटी ऊपर ऊपर से बात करते. तारा, आपको कब बताया गया करवा चौथ के बारे में? और आई नो बिफोर मैरिज ऑल्सो डिस्कशंस होती हैं और कई सारी बातें होती हैं, तो कुछ लड़कियां हमारे देश में तब भी फास्ट रखना चालू कर देती हैं बिकॉज दे डोंट नो एनी बेटर, आई थिंक. Yeah, so, okay. So I was married when I was 19. Don't ask. Yes. Foolish decision. And the first year after I got married, my mother has never kept Karva Chauth. My mom was an early feminist, never kept Karva Chauth, but my grandmom did. I think when I first got married, this was the year I was 19. This was 2003. And my first Karva Chauth, I was very excited. I was like, I'm going to do this. Matlab choice feminism ke naam se, I was like, this is okay. This is something I'm going to do now. And I remember being really sick. And my father was in hospital, okay? And this aunt had come to visit. And Auntie Ira is one of the most feminist, like Jhandemar, socialist, feminist people I've ever met. And I really look up to her. And she gave me a piece of her mind. She was like, what are you doing? And I'm like, no, choice feminism, it's okay. Why not? We can subvert these rituals. And she's like, no, you can't. What rubbish. She was really disappointed. And for me, disappointing Auntie Ira on matters like this was very heartbreaking. Like, it was not allowed in my head to disappoint Auntie Ira. And then, of course, even with being a feminist, no one is born fully formed. Okay? So we are learning as we go because we learn what we grew up with, and we have grown up with a patriarchal world. Now, of course, we have no choices आजकल. मतलब इतना internet, इतना Instagram, ये वो, you are exposed to many ways of being. So you don't necessarily have the excuse कि मतलब ये परदादों के टाइम से होता आ रहा है, so it must be right because we don't have the knowledge to know better. वो हमारे पास excuse नहीं बचता है. So I really think for me, Karva Chauth happened once. It was a mistake, as was the marriage, by the way. Please don't marry at 19. Anybody who's listening, don't. Your prefrontal cortex is not developed. Your brain is not developed. But anyway, so these are things that religion and rituals are things that you grew up with.
You don't question them. Yeah. But Karva Chauth in particular, like Kanyadan, needs to be questioned. मतलब कन्यादान में भी क्या होता है? Same thing. You are a possession. Your worth is only related to the value of your relationships to men. तो ये वही है. I mean, you fast for the long life of your husband. औरतों का मतलब there's no one fasting for the women. हाँ नहीं, उनका लंबी आयु से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मर्दों के पास राइट है शायद. बट हाँ, मेरे तरफ से पेट्रियार्की तो और रिलीजन जो बाय मेन है, फॉर मेन है, मतलब उसमें तो सारा इम्पोर्टेंस तो मेल्स को ही दिया जाता है. बट आजकल इस वातावरण में, इन द नॉलेज इकोनॉमी, क्या ये मेल वायलेंस या मेल प्रोटेक्शनिज्म का क्या रोल रहता है? नहीं है. अगर आप लोग हमारे अगस्त वाले पॉडकास्ट को सुन चुके हैं तो आपको पता है कि हमने उसमें कन्यादान की बात की है, तो आप जाके एक बार राखी वाला भी सुन लीजिएगा. बट जो और लोग सुन रहे हैं या पहली बार आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि फेमिनिज्म एंटी रिलीजन या एंटी पीपल नहीं है. इट इज रैदर फॉर इक्वालिटी. सबके लिए एक तरीके की जीवन होना जरूरी है. तारा, मेरे लिए ना कैसा था कि दादी फास्ट करती हैं अभी भी, आज भी, और वो काफी बूढ़ी हैं. सरगी केम टू हर फ्रॉम पॉप कल्चर बॉलीवुड, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड ने भी करवा चौथ को एक. और सरगी क्या होता है? सरगी सुबह सुबह ना 4 बजे आज आपके पास चीजें, पहले ज्वेलरी भी होती थी, बट इट इज बंच ऑफ क्लोथ्स, ज्वेलरी एंड व्हाटएवर द सास वांट्स टू गिव टू द बहू. तो पहले भी आता है, बट इट इज अडॉर्न इन द मॉर्निंग विथ योर योर इंटरमिटेंट का स्टार्ट ऑफ द फास्ट. मतलब आप स्टार्ट में खा लो ताकि यू सस्टेन थ्रू द डे, और वो आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही समझ है उसका कि जस्ट एज इंटरमिटेंट फास्टिंग इट वर्क्स फॉर मी, इट्स अ ग्रेट थिंग, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक इट वर्क्स वेरी वेल. लेकिन अगर आप सोचो कि दादी करती हैं बट थ्रू द डे शाम तक चाय पी लेती है, बिकॉज हरियाणा में आई थिंक सम अलाउंस ऑफ चाय है, पता नहीं क्या है, या उनको शायद हमेशा से आदत रही वो करने की. मम्मी मेरी बहुत वीक है, उनसे नहीं हो पाता है, बट वो करती है बिकॉज. एंड देन आई वुड सिट विथ हर, मैं उनके साथ बैठता था और सुनता था कहानी की वीरावती, और फिर उनके बाद वाली जो सारी 5 और कहानियां होती हैं जिसके साथ आप देख सकते हो कि वाई इट इज डन, व्हाट हैड हैपेंड नहीं करने से, एंड देन सम साधु बाबा या बाबा ने किसी ने बोला या रिलीजियस लीडर ने उन्हें बताया कि करने से आपका ठीक होगा, एंड फिर ठीक हो जाती हैं. तो वो कहानियां जब आप सुनते हो तो आपको लगता है कुछ बिलीफ है, तो कहीं ना कहीं वो कहानियां थोड़ी सी ब्रेन वॉशिंग टाइप की भी काम करती है. एंड देन लाइक यू अराइव्ड बिकॉज ऑफ आंटी ईरा, आई अराइव्ड एट द अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है करने की. व्हेन रीमा एंड आई गॉट मैरिड एंड रीमा सेड मैं नहीं करूंगी, एंड थ्रू आउट हर डेटिंग लाइफ शी हैड इंडिकेटेड टू मी कि वो नहीं करने वाली है. तो मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग था कि ये अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम लोग रीडिफाइन भी कर सकते हैं. एक्सेप्ट करवा चौथ में भी इज नॉट अ फेस्टिवल. जैसे हमने राखी को रीडिफाइन किया था, शायद करवा चौथ उस ब्रैकेट में नहीं आता है जहां हम इसको भी चेंज कर सकते हैं. देखो, I've heard of this Karva Chauth, people trying to reinvent Karva Chauth. But I really think that there's some festivals or some aspects that are best just letting them slide. Because I'm not certain you can reinvent something that has such misogynistic ideology behind it. So, मतलब fasting भी देख लो. Actually, if you look at it, and again, I'm talking about some of the men and their families that I interviewed for Why Men Rape. I went undercover with 9 men who have raped. Auratho, in traditional families, in traditional cultures, the amount of pressure on women and their bodies and controlling their bodies and how much they eat, inherently fasting for religious reasons, especially when it is gendered, is only a means of control. मत खाओ खाना, तुम्हारा आदमी मर जाएगा. I mean, the logic, but वो उसकी बात हम बाद में करेंगे. But mythology, religious mythology, is based in the ideology that women's bodies, women are not anything but the possessions of their men. Karva Chauth
I don't know. This whole ideology, all of it is part of patriarchy, all of it is part of rape culture. All of it is part of the idea that women are not allowed to, women cannot have agency, do not have rights. ये सब एक ही सिक्के का हिस्सा है. It's a simple. So, anyway, but what I have been noticing happening is that a lot of people are challenging this. मतलब जैसे मैंने कहा था कि अभी हमारे पास इतना इन्फ्लुएंस है, इतने आइडियोलॉजीज हैं जो हमारे इनबॉक्स, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे टिकटॉक से आते हैं, इतने आइडियोलॉजीज की एक्सपोजर से whether or not women are calling themselves feminist, फेमिनिज्म का असर पड़ा है उन पे, उनकी लाइफ पे. So I think that we are now at a stage where we cannot say कि होता रहा है or this is the way it was, because we have so many choices. Exactly. एजेंसी से ही वो बात आती है कि किसी का भी आप पे हक नहीं है जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपकी एज अ वाइफ ड्यूटी नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा. आई थिंक यही सिर्फ हम सवाल उठा रहे हैं, और इससे कोई रिलेशन नहीं है कि आपके फास्ट करने से आपके पति की जीवन आयु बढ़ जाएगी. देयर इज नो कोरिलेशन. तो ये कि आप वैल्यूएबल तभी हैं जब आप एक अच्छी पत्नी बन के अच्छे कर्म जैसे कि करवा चौथ करके ही अपने पति के लिए अच्छी बनेंगी, is the point that we are debating. Yeah, and also, देखो, Sid, there are studies that have shown that historically women are more forward thinking and than men, and men are more conservative. क्योंकि I think it comes from need, because जो ideologies चले आ रहे हैं वो women के लिए बहुत detrimental हैं. So women start questioning a lot sooner than men ever need to. Like you talk to me about, never having thought about Raksha Bandhan, or, a different way that Rima said she would or wouldn't celebrate, and that was new for you. Yeah. Right? So I don't think that men today are fully accepting of the choice of women's decisions on this front. You want to be a feminist, but you think कि अरे मम्मी बोल रही हैं आज कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, like please now उनकी मनमानी कर लो, or you don't want to. So I think कि within a couple, an issue like Karva Chauth, especially if she doesn't want to celebrate, or you are feminist and you debate with her the reasons that she's celebrating. But I don't think within a couple, if you are actually following what we've been saying all along, कि हमारा love, हमारा प्यार feminist होना चाहिए, and it should be equal and healthy. तो अगर हम ये कह रहे हैं तो फिर आप कपल में तो ये इस बात की बहस होना ही नहीं चाहिए. There should be no reason to argue about this. बट कठिन हो सकता है लड़के के लिए, क्योंकि सडनली यू आर बोर्न विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, आप अपनी माँ से एक बार बात करें या उनको बताएं, या तो आप दोनों एज अ कपल छुपा लें आप नहीं कर रहे हो तो, या आप बताएं और उनको भी सिखाएं. बट बिफोर दैट कम्स द फैक्ट दैट मुझे अपने आप की कंडीशनिंग को निकालना पड़ा. यही चलता आ रहा है तो ये सही है नहीं. क्या मैं सीख के बेटर पर्सन बन सकता हूँ? क्या मैं अपनी पार्टनर के लिए एक बेटर सिनेरियो सेटअप कर सकता हूँ? और जैसे आपने बोला दो लोगों के बीच की बात, क्या वो दो लोगों के बीच में एक बात हो के ये एमिकेबली रिजॉल्व हो सकता है, तो वो बेटर सिचुएशन है. एंड दैट्स हाउ यू रीइन्वेंट करवा चौथ फॉर yourself as a couple. You're right, it is difficult for the man, but I think it's very important especially when women, for feminist men, or men who want equal partnerships, it's very important that you question all of these things that have supported your beliefs and your superiority. And privilege, when you have it, is very hard to give away. You don't want to give it away. So you're going to fight this, but it is a very important conversation that you must have. 100%. तो ये जैसे नहीं,
So being a feminist for a male is hard, but it's not impossible. And also it has the additional thing कि male feminist जो भी होते हैं ना, उनको बहुत भाव मिलता है. मतलब जो चीज औरत मतलब सालों से स्क्रीम करे आ रही है, वो एक बार मेल फेमिनिस्ट बोल देना तो सब सुन लेते हैं. Exactly. So and if you're the Raja Beta in the house and your spouse does not want to celebrate Karva Chauth, use your privilege ना. मतलब बोल दो कि नहीं करेगी. हाँ, और फुट डाउन रखने की बात होती है. आपको खुद में बल लाना पड़ेगा और फुट डाउन रख के बोलना पड़ेगा. क्योंकि देखिए, रिलीजियस एक्सपर्ट जो हमारे सुन रहे होंगे, आपको किसने बनाया रिलीजियस एक्सपर्ट? और आप क्योंकि बरसेंगे कमेंट्स में, हम पहले ही अपने वो बता देते हैं कि कोई करेक्ट या इनकरेक्ट वे तो है नहीं. जिस तरीके से आप अपने रिलीजन को, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना चाहते हैं, हम सिर्फ उसी को बढ़ावा दे रहे हैं और एक तर्क रख रहे हैं आप तक कि आप दोनों एक दूसरे से बात करो. you're the couple, you're the two people in a marriage, you decide how you want to do things. Even in a relationship, अगर आप डेट कर रहे हो, क्योंकि कई सारी महिलाएं हमारे देश में, यंग गर्ल्स, करवा चौथ रखती हैं बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी दैट्स बीइंग फेड. शायद आप अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हो आपको भी नहीं पता. बट कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी तो बहुत फैलेगा है, क्योंकि सदियों से चला रहा, तो बहुत बल है इसमें. बट इट डजंट, जस्ट बिकॉज इट्स माइट डजंट मीन इट्स राइट. Yeah, that's true. फिर हम कास्ट सिस्टम क्यों छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये सारे सिस्टम्स क्यों रीइन्वेंट कर रहे हैं? करेक्ट. तो है चैलेंज करते हैं रिचुअल्स को थोड़ा सा. तो हाँ, मतलब ऐसा भी सुना है कि the people who do mutual fasting and all, but I think कि why fast at all, man? I mean, फास्टिंग करनी है तो जो मेरे डाइट का एक्सपीरियंस वो है कि एक हफ्ते में एक बार कर लेना चाहिए आपको फास्टिंग. उसके आपका कीटोसिस चालू हो जाता है. कई सारी अच्छी चीजें, बट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ मेडिकल साइंस या न्यूट्रिशन का, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा. आपको वैसे ही फास्ट करना है थ्रू आउट द ईयर, कितनी भी बार करो. करवा चौथ की आड़ में नहीं तू कर रही है तो मैं भी करूंगा वाली जो तर्क है वो मेरे को समझ में नहीं आता. सिर्फ एक चीज है जो मैं मेल फेमिनिस्ट को कहना चाहती हूँ, जो कि टू लेवल द प्लेइंग फील्ड. मतलब इतने सालों का प्रिविलेज जो आपको मिला है, उसको चेंज करने के लिए, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको ज्यादा देना पड़ेगा. It's not equal. You don't show up to the table and say, Acha, now in my house everything is equal. Your spouse or your partner has had to struggle a lot more for the same career opportunities that you've had. And then there's household work, and then there's all of this stuff that is directly ladled onto women. So it's not equal. What you have to do is affirmative action. मतलब feminist हो तो feminist बन के दिखाओ. Show, like, use your privilege well. You have a lot of it. I think that there is one way, Sid, in which Karva Chauth can be reinvented, and that is if the husbands start to fast and the wives don't. Perfect. That'll be interesting. Not mutual. Yeah, mutual fast is just equaling. But if you actually want to make a statement about being feminist and also simultaneously being religious, फिर mutual fast मत करो. उनको खाना खिलाओ और आप खुद भूखे रहो अपने परदादों के सिंस के लिए. हाँ, सही बात है. देखो, कई लोग जो नॉन रिलीजियस एक्सपर्ट्स हमारे कमेंट्स में आ सकते हैं और बात कर सकते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं तारा, कुछ लोग ये तर्क रख सकते हैं कि इट इज अबाउट डीप लव, हाउ इट सिंबलाइजेस डीप लव, हाउ करवा चौथ सिंबलाइज. But only the wives love the men or what? Husbands don't love their wives. बहुत सही, आंसर्ड राइट देयर. रैपिड फायर हो गया ये तो. डिवोशन की भी बात आ सकती है कि भाई डिवोशन के बारे में फिर क्या बोलोगे आप? तो क्या ये एक दूसरे no devotion from the husbands, not expected. Husbands के लिए स्टैंडर्ड बहुत लो है ना. मतलब अच्छा, don't beat her and it's all good. मतलब इतना कर लो. एग्जैक्टली. आई थिंक ये फिर सारे पॉइंट्स, एक ही पॉइंट सब में अप्लाई हो जाएगा. कमिटमेंट को करवा चौथ वो करता है,
तो वो आप बिना करवा चौथ के भी कमिटेड रह सकते हैं अगर आपको रहना है तो, वट एवर आपकी रिलेशनशिप की फिगरेटिव वो है जिंदगी, बट But listen, I have to say this, okay? I know I've been criticizing choice feminism and मैंने खुद बहुत mistakes किए हैं journey में. Everyone does. कोई fully formed bond नहीं होता. But I do want to say this, that not all choices made by women. So you might choose to celebrate Karva Chauth despite this whole conversation that you've listened to. Not all choices made by women, even feminists, are feminists just because they're women's or even feminist choices. Yeah. मतलब हम सब negotiate कर रहे हैं patriarchy को. हम सब मतलब you can say तुम बिल्कुल ब्यूटी पार्लर मत जाओ because beauty is a patriarchal concept. It is a one-sided concept, but we're not negotiating the world, no, the way we see it. Yeah. So I think, हाँ, सब इवॉल्व हो रहे हैं ना, सब इवॉल्व हो रहे हैं और सब ऐसे choices बनाएंगे जो they're not perfect feminist choices, but nothing is. None of our choices can be. We also can't force you to make feminist choices or the right choices, right? Because you have to eventually yield to choice, someone's choice to do this. But we're all balancing. So I do think feminists should say no to Karva Chauth. Okay? And we should all recognize that we all strike like a patriarchal balance. We're all negotiating patriarchy. Yeah. So जहां पे आप choices बनाते हो जो feminist नहीं है, you have to be kinder to yourself and other people making such choices. That's true. देखिए आपके लिए कठिन हो सकता है एज अ मैन, आपको पहले अपने परिवार से लड़ना पड़ सकता है आपको, या कॉन्वर्जेशन अगर आपके परिवार में कॉन्वर्जेशंस होती हैं, फिर आपको खुद से भी लड़ना पड़ सकता है क्योंकि आपकी कंडीशनिंग को पहले आपको अनकंडीशन सा करना पड़ेगा और फिर आप इसको शायद समझ पाए, बिकॉज आई एम गिविंग लाइक एक्शन पॉइंट्स. कोई बोले हाँ ठीक है चल मैं चेंज होना चाहता हूँ आपकी बात सुन के, बट सिर्फ ये है कि सो आई हैव सेड दिस बिफोर, इफ यू आर ट्राइंग टू हैव अ फेमिनिस्ट इगैलिटेरियन लव, कपल में इस बात को लेके बहस होना ही नहीं चाहिए. देयर इज नथिंग टू फाइट अबाउट. देयर इज अ पेट्रियार्कल रिचुअल दैट यू शुड आइडियली नॉट फॉलो. And don't make your wives or girlfriends follow this if they don't want to, because time has passed and we should all grow up. But if you are trying to change everybody around you as well, you have to present a united front. Like even if you've had a conversation and you don't fully agree, but when you go and speak to your family and say, "वो नहीं करेगी," it's fine. I don't care. Like, you know, you have to present a united front as a couple to the world. Because वो क्योंकि बहुत hard है, मतलब ऐसी चीजें करना traditional families में, spousal support from the male spouse goes a long way in establishing the rules around the bahu, especially if he's the Raja Beta or the primary earner or all of those things. It makes a huge difference. So whatever you privately believe, and you should not be fighting about this in any case, mera manna hai, but whatever you privately believe, you have to not show any disagreement to the family. Perfect. Because फिर उसपे and you will get a little bit of criticism. मतलब जोरू का गुलाम हो गया है, मतलब मॉडर्न, क्या लड़की ने क्या कर दिया है, हमारा बेटा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म, ये क्या वेस्टर्न मत बनो तुम, हाँ कल्चर को वो कर रहे हो. हाँ ये सब मिलेगा, पर इट्स ओके, इतना तो सेल हो गया. मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था लाइफ में, बट रीमा तभी फास्ट नहीं करती थी, मेडिकल साइंस वापस लेके आ गए हमको, और मतलब आईसीयू में वो करवा चौथ का फास्ट नहीं हेल्प किया. तो टेक्निकली तो मैं साइंस से की तरफ से तर्क रख रहा हूँ एक, बट
जैसे हमने दूसरे एपिसोड में बोला था एगैलिटेरियन लव के बारे में, आप एक दूसरे के साथ अगर कमिटमेंट और प्यार और ये सब बढ़ाना चाहते हो तो व्हेन यू शेयर द लोड, जब आप दोनों मिलके वॉशिंग मशीन लगाओगे या फोल्ड करोगे कपड़े या खाना बनाओगे या जस्ट बातें करोगे, तो आई थिंक उधर से ही एक दूसरे के लिए कमिटमेंट, लव, यूनिटी आ जाएगी। तो फिर आपको बाकी चीजों की फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। They're in a much better place just because you shared the load. Yeah, absolutely. There are a lot of ways to प्यार बढ़ाओ. झूठा खाने से भी प्यार बढ़ता है, I've heard. Yeah. But there's a lot of ways to do it. It does not need to involve keeping your spouse starving. Correct. तो एसेंशियली यही है कि हम लोग कुछ चीजों को क्वेश्चन कर रहे हैं और कुछ चीजों को बोल रहे हैं कि आप अपने एक दूसरे के बीच में बात करके ठीक कर लें। म्यूचुअल फास्टिंग करनी है, म्यूचुअल फास्टिंग कर लो, मर्द को फास्ट करना है वो कर ले, बट वो दोनों आप दोनों के बीच की बात है। दैट्स हाउ आई थिंक यू विल बी इन अ मच बेटर प्लेस। आई थिंक आजकल विद द वे द वर्ल्ड इज, सिड, आई थिंक कि पूरे खानदान का रोल, पूरे विलेज का रोल, पूरी कम्युनिटी का रोल हम एक बंदे में फाइंड करना चाहते हैं, बिकॉज रोमांस, एंड दिस मीन्स दैट there's a lot of pressure on couples. Yeah. To work. Like Esther Perel, who's that very famous relationship expert, she said never before has the survival of a family depended so much on the happiness of a couple. It's important to treat your partnership well. It's important to respect it and realize that, the time has come where that's what women expect from their men. Yeah. तो आपको फेमिनिज्म, आप फेमिनिज्म का वर्ड गूगल करें, देखें, अच्छे से पढ़ें उसको और बने फेमिनिस्ट और अपनी अनलर्निंग्स को आगे बढ़ाएं, बताएं, और अपने मर्दों के बीच में भी, instead of doing a laugh with like misogynistic jokes, you can have a laugh about, अरे मुझे ये नहीं पता था, मुझे अब पता चला, सडनली मेरा दिमाग चमका, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, and our relationship has gotten XYZ wise better. आपने एक और चीज बोली तारा, you said choice feminism. I think हमें थोड़ा सा क्विकली एक्सपैंड करके उसके बारे में बता देना चाहिए कि होता क्या है choice feminism. So essentially choice feminism is this, that we're all making choices, some of which are patriarchal and some of which are not. And most feminists will try to make mostly feminist choices. Right? You can't always. It doesn't always happen. But you'll try and make mostly feminist choices. Most feminists will. But some people justify, instead of saying, okay, I'm a feminist, but I do XYZ things that are not feminist. Instead of doing that, some feminists say, oh, but individual choices are a part of feminism. Therefore, what I am doing is feminist. So instead of then saying that, this is not a feminist choice, you say, oh, it's a choice because it's feminist because it's a woman's choice. Yeah. Which is not. So, that's what choice feminism is. मोटा मोटी कांस्टेंट बैलेंस के लिए ही हम स्ट्राइव कर रहे हैं, देखिए, है ना? तो while all feminists should say no to Karva Chauth, which is our hashtag for this episode, I would say is hashtag say no to Karva Chauth, all feminists should recognize that all of us need to strike, these patriarchal bargains in different ways, in ways that make sense to you, आपके परिवार, आपके between the two of you as a couple, and just be kinder to yourself. Yeah, be kinder to yourself. Say no to Karva Chauth. And go forth and feminist. एंड जो तारा ने बोला, यूनाइटेड फ्रंट रखना पड़ेगा आपको दोनों को, ताकि दीज बैटल्स आर इजियर फॉट. सो एक छोटा सा कीड़ा डाल दिए हम लोग आपके दिमाग में. कमेंट्स में हमें बताओ आप लोगों को क्या लगता है. एंड यू कैन लिसन टू रिलेशनशिप ऑन एनी ऑफ योर फेवरेट पॉडकास्टिंग एप्स. स्पॉटिफाई, यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप हमें प्लीज बताएं कैसा लगा आप लोगों को बाकी एपिसोड्स. Do let us know if you want to take up different topics to talk about, and And if you're having relationship issues, tell us what they are. I hear from a lot of women and men about living a feminist life or about issues that are impacting their relationships.
So let us know what you want us to talk about. अगर आपको एज अ मर्द डाउट हो रहा है कि कैसे आप अपना फुट फॉरवर्ड रखें और करें, लड़ाइयां हो रही हैं, तो वी कैन शेयर दैट नॉलेज ऑल्सो एंड जस्ट गिव एनेक्डोट्स टू ईच अदर एज टू हाउ टू बेटर आवर लाइव्स फ्रॉम देयर, बिकॉज एक अच्छी इक्वल दुनिया ही सबके लिए बेहतरीन होगी. बट कीप वॉचिंग एंड लिसनिंग टू द रिलेशनशिप पॉडकास्ट. दिस इज सिद्धार्थ आलम्बायन साइनिंग आउट. This is Tara Kaushal. See you soon. Bye.